जी, अली आप प्रोमो वीडियो चला दें। जी अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेरी वार्म वेलकम। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं कामिल खान साहब, द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO ऑफ मिचेल्स फ्रूट फार्म। कामिल साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम सालेम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सर फॉर टेकिंग द अपॉर्चुनिटी टू जॉइन अस एंड फॉर टॉकिंग टू अस टुडे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी यूनिवर्सिटी का शुक्रिया टू इनवाइट मी एंड टॉक टू योर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। ग्रेट। तो कामिल, with your permission, मैं आपका एक मुख्तसर सा तारीफ करवाता हूँ based on the profile that we have. Kamil Khan is currently working as the COO in Mitchell's Fruit Farms. He did his MBA in double majors in marketing and finance from National College of Business Administration and Economics, NCBA&E. Kamil has 20 years of experience in media, telecom, FMCG, sports, and content development. He started his career from a media industry and worked his way up to become a marketing professional. Kamil led the Digital Acceleration and Transformation Initiative with Nestle Pakistan, then launched PCB into the digital world, generating revenues of over $5 million US, making it the fastest growing cricket board with its digital streaming and content generation. He also made PSL the biggest and most loved brand of Pakistan with his team, launched Kabaddi World Cup, and has his own fitness startup, mashallah. Currently, he's serving as a COO and double hatting with driving transformation and rebuilding one of the oldest FMCG brands of Pakistan, Mitchell's Fruit Farms. Kamil is an avid traveler and gastronome. He loves to swim and is a movie buff. Thank you, Kamil Saab, again. What a diverse portfolio, mashallah, और बड़ा interesting आपका एक professional career भी रहा है. I think from PCB to media to now, mashallah, a head of operations at a legacy-based FMCG entity. जिसके मेरे साथ I must give a disclaimer को जो Mitchell's का old English मामले जो है ना, that's been a flavor of my grandparents' lives, my life, my parents' lives. It's one of my favorites. So Mitchell is doing a great job with the old English marmalade. But thank you again. आपने हमें आज join किया. तो इस तरह से शुरू करते हैं Q&A के tell us about, fill in the gaps a little bit about your personal and professional journey जो कि हमने शायद आपके profile में cover ना की हो. Salem, I think a lot has been covered and summarized, but just to kick off, वो कहते हैं कि behind every successful man or a great man there is a woman. So in this scenario, I think it's my mother.
ये बात है कोई 20-21 साल पहले की, यू नो आई वाज नेवर अ गुड स्टूडेंट, क्योंकि आज हम स्टूडेंट से बात करें, आई वाज नेवर अ फैंटास्टिक स्टूडेंट और एन ए ग्रेडर, एंड यूजुअली एक बैक बेंचर होता था मैं. एंड माय मदर वाज जनरली वेरी वरीड अबाउट द फैक्ट कि यार ये पीछे बैठता रहता है, हर दूसरे दिन इसकी पेरेंट टीचर मीटिंग कॉल हो जाती है, एंड मे बी इज नॉट गोइंग टू हैव a great future. So as we went on, and university ka time tha, and it was probably the last year of the university, and I was doing my bachelor's. तो बड़ा समझाया मेरी वालदा ने, बड़ा इमोशनली चार्ज अप किया मुझे कि you know there is a point in time when one has to either man up and take a decision. तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम वो विशफुल थिंकिंग हमारी पूरी करो, बट कुछ कर लो. ठीक है ना, डू समथिंग, डू एनीथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट, एनीथिंग दैट यू फील दैट can satisfy you. As far you are moving and not acting like a tree, things will work out for you. So ये चीज उनकी मुझे जो है ना बड़ी जबरदस्त लगी, and I said कि ठीक है यार, मेरा एक ही पैशन, एक ही चीज है जो यूनिवर्सिटी में हम बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे, और वो है कि हम बैठ के ना फिल्में बनाएं. So we wanted to make films, and that's how the journey started. I joined a studio back in 2001, and we started making short films. तब ये फिल्म मेकिंग का कॉन्सेप्ट और अंडरग्राउंड सिनेमा बहुत नया था, और ये पैशन इस तरह भी शुरू हुआ कि बहुत सारे कॉन्सर्ट्स और अंडरग्राउंड गिग्स होती थी लाहौर में. शायद ये अब स्टूडेंट्स को आइडिया ना हो कि मैं क्या फ्रेंच बोल रहा हूँ. अंडरग्राउंड सीन एंड अंडरग्राउंड गिग्स और ये सारी चीजें, क्योंकि अब तो रेव्स और इन चीजों का जमाना आ गया. तो आई यूज्ड टू गो एंड कवर दोज इवेंट्स आल्सो. मेरे वालिद साहब ने मुझे एक कैम कॉर्डर ला के दिया हुआ था, एंड आई यूज्ड टू कवर इट. एंड और वो ऐसा, वो एक प्रिविलेज भी लगता था, बिकॉज उस पूरे सीन में मैं एक वाहिद बंदा था जो कैमरा लेके कवर करता था और कैम कॉर्डर था. तो एक आपको फील आती है कि यार ये बंदा है जो वीडियोग्राफर भी. सो कंटेंट कम्युनिकेशन और स्टोरी टेलिंग का जो है वो एक डीएनए डेवलप हुआ एज अ प्रोफेशन. और वहां से लेके अब तक अगर आपने जितनी मेरी प्रोफाइल एक्सप्लेन की, तो आई थिंक एवरीथिंग दैट आई हैव बेस्ड is based out of my professional DNA, which is storytelling, communication, or it just started to weave out of that. So वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई. उसके अंदर 2 फेल्ड स्टार्टअप्स भी थे. एक म्यूजिक मैगजीन खोला. तब मैगजीन होते थे, बाय द वे, ये फेसबुक वाली कहानी नहीं होती थी. वहां पे बेचने के लिए एक मैगजीन के साथ एक सीडी लगा के देता था मैं कि यार ये सीडी भी सुन ले और मैगजीन भी ले. सो फिर एक इवेंट्स कंपनी खोल ली. अब तो देखिए ये पूरा इवेंट हो रहा है ऑनलाइन. सो वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड सो मच, एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि हमारी global transformation is very much dependent on how we used to operate in the past. So I think it's always good to repeat a bit of history. कि पहले events in physical होते थे, अब online events होते हैं. Arenas की जगह Zoom ने ले ली है, and that's how the journey went on. And media generally back in the days wasn't a very well paid industry, and that kind of pushed me to get into my MBA. वहाँ से MBA किया, and then I joined interestingly I joined an educational institute, और वहाँ पे मुझे research analyst का काम मिल गया. So I did that for about 8 months. Education और students के ऊपर ही एक research project था, which was something great to get into insights about how education used to work. कितने लोग PhD करते हैं हर साल में हमारा education का जो है caliber किस level पे. So it was a good research, and that is where it all started out of post graduation. And then it was marketing specific, communication specific roles that I did. And I think reaching out to PCB or the cricket board and launching PSL was one of the greatest moment of my career. And I think I learned immensely. And the reason that I learned was that I took this leap of faith कि नेस्ले छोड़ के, FMCG छोड़ के completely transform करना exporting industry में was a leap of faith. But इसकी underlining ये है कि everything that I was doing was built on to that one line that I started off from. That was कि यार keep moving.
बढ़ते रहो, ट्राई करते रहो और कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे. And then that's how the journey I'm living, and today we're having a good conversation. Great, fantastic. Thank you for filling in those gaps. आपने बड़ी एक दिलचस्प अंदाज से, I think अपना हर किसी का अपना फ्लेवर होता है. Everybody has a background जिसके थ्रू वो गुजरते हैं, अपनी जर्नी होती है. आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग आई थिंक जर्नी रही है फ्रॉम द मीडिया वर्ल्ड, फिर मार्केटिंग वर्ल्ड. मार्केटिंग में आपने एफएमसीजी से जंप किया इनटू अ, एट दैट टाइम आई थिंक, आई एम श्योर के पीसीबी पीएसएल वाला जो मामला था वो बहुत नेसेंट उसमें था. और एंड देन फ्रॉम मार्केटिंग टू ऑपरेशंस, द नट्स एंड बोल्ट्स, थोड़ा सा उसमें बताइए कि आपकी what sort of skills were easily carried over, and what were the skills that you learned which could be redeployed, or you recalibrated yourself apne professional career mein. And then we'll launch into our topic for today, which is more oriented towards Mitchells and the food business in Pakistan. But if you could just help us fill in that transition gap, uske bare mein bataiye. Salim, बड़ा interesting question है और ये छोटी but बहुत interesting journey है. And generally I speak about it with a lot of people in different ways because उधर audience फर्क होती है. यहाँ पे बैठे हुए लोगों के लिए जो सुन रहे हैं हमें, उनके लिए इस तरह है कुछ कहानी कि almost 2 years ago when I left, almost 3 years ago when I left the cricket board, the reason was कि मैं I wanted to run my own startup. मैं स्पोर्ट्स की दुनिया से आया था और बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा, और मुझे लगा कि ये एक वो एरिया है जहाँ पे आप एक्चुअली एक बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू अ हेल्दी सोसाइटी, एक मेंटली हेल्दी सोसाइटी को आप कंट्रीब्यूट, एंड दैट्स द रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन आवर लाइव्स. जिसकी बेसिस पे अगर आप कुछ पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि when I was in PCB, there was a lot of operational job we were doing. और operations के अंदर जो interesting part है वो ये होता है कि जब आप operations manage कर रहे होते हैं उसमें आपको हर किस्म के बंदे से डील करना पड़ता है. So आपका leadership skill काफी polish होता है. आपको unforeseen challenges के through गुजरना पड़ता है because crisis management and crisis is a part and parcel of operations, and there is not a day जब आपको surprise नहीं मिलता. So cricket board के अंदर काम करते हुए और एक ऐसी expectation पे काम करते हुए जहाँ पे आपने हर रोज live system के अंदर रह के deliver करना है. So lot of those things were polishing me unknowingly. कई दफा ऐसी चीजें होती है जो आपको नहीं पता होता कि आप उन चीजों के लिए prepare हो रहे हैं, but and the future honestly you don't know. So वो कहते हैं go with the flow sometimes also. So as I was going with the flow, a lot of my skills were being polished from an operational challenge. I left, I created my own startup, एक fitness startup हमने शुरू किया. बहुत आगे तक हम चले गए. फिर unfortunately crisis आया, which was COVID, जो हम सबने face किया, और sports भी ऐसी थी which was a contact sport. तो कांटेक्ट तो ह्यूमन कांटेक्ट तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो गया, विच अगेन हमें उसने मौका दिया टू इनोवेट, जिसके अंदर आई क्रिएटेड एन ऑनलाइन स्पोर्ट्स चैनल. वी वर कवरिंग अ लॉट ऑफ इवेंट्स, लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, लॉट ऑफ स्टोरीज, और वही चीज वापस ग्रास रूट पे ले गई और एवरीडे ऑपरेशंस को मैनेज करना था, लोगों को मैनेज करना था, सिस्टम्स को री इंजीनियर करना था, सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म और रीडिजाइन करना था. सो ये एक जर्नी रही जिसने मुझे काफी हद तक पॉलिश किया. एंड देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी एट मिचेल्स कि जी आप आए और हमारी मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस को भी देखें. सो एक तरफ ब्रांड को रीबिल्ड करना था, विच आई बिलीव के wasn't very difficult journey for me, but उसमें difficult part था the people's part. लोगों को भी आपने ट्रांसफॉर्म करना होता है when you are transitioning. जब आप रिवाइवल में जाते हैं, जब आप एक नया कोर्स ऑफ एक्शन लेते हैं, तो बहुत सारे लोग पुराने कोर्स ऑफ एक्शन में स्टक होते हैं और उनका माइंड सेट ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ता है, विच बाय द वे इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. तो वो भी एक चैलेंज था, और फिर ऑब्वियसली ऑपरेशंस भी था. तो ये दिस इज हाउ आई लैंडेड अप, एंड अल्हम्दुलिल्लाह सो फार द जर्नी हैज बीन वेरी एक्साइटिंग. देयर हैज नॉट बीन अ डे जहां मैं ये कहूँ कि यार आज कोई नया पंगा नहीं मिला करने को.
हर रोज Very एक नई interesting. चीज है सीखने को। बड़ी आपने अगेन बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की एंड आई थिंक जो आप जर्नी में बताया कि जी आई थिंक लर्निंग फ्रॉम समबडीज एल्सेस फेलियर वो इतना नहीं आपको सिखाता है जितना आई थिंक आप अपने फेलियर से सीखते हैं एंड देन यू डस्ट योरसेल्फ ऑफ, आप यू ब्रश योरसेल्फ ऑफ, यू स्टार्ट अगेन। तो माशाल्लाह आपने हर किस्म के चैलेंजेस देखे। सम आई थिंक जिस तरह कोविड की आपने बात की, दोज चैलेंजेस वर लेट्स से एक्सटर्नैलिटीज जो कि हर किसी को फेस करनी पड़ी एंड दे इम्पैक्टेड यू एज समथिंग व्हिच वाज मच बियॉन्ड एनीबॉडी एल्सेस कंट्रोल। एंड देन ऑफ कोर्स आपने आई थिंक जो म्यूजिक मैगजीन की बात की, अगेन आई थिंक आई कैन रिलेट बैक टू द टाइम जब magazines used to come with CDs and again the landscape changed, जिस तरह आप कह रहे हैं कि the arena changed, the stadium in which we played, वो सारी चीज एकदम बदल गई। So a lot of interesting times, especially I think for us who have seen this change, those जो कि इस change के अंदर पैदा हुए और उन्होंने देखा वो it's this is reality, this is as it always used to be, whereas I think the pace that we have seen and the evolution we have seen वो बाकी बहुत फर्क है। Kamil, let's dilate upon जो आपने बिल्कुल एंड में बात की थोड़ी सी कि you ended up joining, you got an opportunity with Mitchell's and एक legacy brand था, बहुत पुराना brand है, आप आए, it's in the food business, FMCG business, marketing engine है, ops का angle बहुत बड़ा है, like you said, I think when any manufacturing or any operation really, like you said, there's not a dull moment, every day is a different fire to put out, a different issue to resolve, new opportunity to tackle. फूड बिजनेस के बारे में particularly बताइए कि what are the challenges that you have seen in Pakistan, what are the opportunities that you've seen in Pakistan? Mitchell's का बहुत पुराना नाम है, let's have a flavor of this landscape. I hope I still have you. लग रहा है कि I have lost you. Let's wait for a moment. मेरे एंड पे है या आपके एंड पे है? We'll just give it a few seconds to reconnect. I think Kamil Sab has dropped off, probably a network issue, but we'll wait for him to come back. I think बड़ी interesting हमारी कहानी चल रही थी. I would be very intrigued to know कि Kamil ने किस तरह से ये challenges को face किया, which were there with the legacy brand, और जो Kamil कह रहे थे that it's the people, it's the culture, जो कि companies are not machines. We want to think of an operation as a well-oiled machine, लेकिन at the end of the day उन्हीं लोगों ने चलाना है. So I think the next question that we'll be asking Kamil is what were the challenges that he faced from the human side of the team that he adopted at Mitchell's when he joined. So we'll wait for him to join back, inshallah. And I see my admin team is saying that he had a net issue, but he should be rejoining. So we'll just welcome him back shortly. Okay, so my admin team is saying that उनका अभी भी internet का मसला आ रहा है. We'll just give it a few moments. My apologies. Please bear with us, and we will be right back.
Yes, can you hear me? I'm Kamil so Sal is sorry. back. No worries. देखिए हम Sorry. इंटरनेट के ज़माने में रह रहे हैं, वो कहते हैं ना Murphy's law always will attack when you're least expecting. Like you said, KG, operations when there's never a dull day, so this is part and parcel of dealing with it. This is another day. But anyways, Another challenge, another opportunity. So मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जी फूड बिजनेस में इन पर्टिकुलर कामिल आपने एक लेगेसी ब्रांड को अडॉप्ट किया एंड आपने एक टीम को अडॉप्ट किया जिसके अपने चैलेंजेस थे आई थिंक लेगेसी बिजनेस के अपने चैलेंजेस थे जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू दी एज यू एंटर्ड मिचेल्स एंड यू टुक ओवर आपको क्या नजर आया आपने क्या चेंज लाया उसके अंदर Salem, I'll be very honest and candid about one thing. When I came, मैं ये नहीं कहूँगा कि जी I was Mr. Know It All. Aristotle, I think, कहता है कि if you're the guy in the room who's the smartest or the wisest, then you're in the wrong room. मतलब I'll be very honest. जब मैं इधर आया था तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जी मुझे सब चीजें पता थी. मुझे नहीं पता था कि फैक्ट्री कैसे चलती है या मशीन्स कैसे ऑपरेट होती हैं या चॉकलेट कैसे बनती है उसकी रेसिपीज कैसे होती है. There was a lot of hard work. But before I really had to get into that zone, क्योंकि यहाँ पे एक जनरल ट्रेंड होता है कि अगर आप इतने वोकल हो जाएं लोगों के साथ कि जी मुझे पता कोई नहीं है तुम लोग मुझे सिखा दो. So that kind of puts you in a very awkward situation. So the first idea was कि यार आपने अपने आप को प्रूव करना होता है the people that you're working when you are in a senior leadership. Usually it's the other way around. लोग कहते हैं यार हमें आप प्रूव करें कि आपको काम आता है कि नहीं आता. But I think it should be the other way around. As a senior leader आप प्रूव करें कि आपको people should trust you और आप ओन करते हैं लोगों को लोग आपको ओन करते हैं. तो जो मेरा वेपन था वो ये था कि I know marketing. That's my low hanging fruit. So that's the team that I need to work closest with. And that's where I started my journey, which was the journey of revamping the brand and everything. और इसी तरीके से I think I gained that trust. एक हमारी bonding हुई लोगों के साथ, and I learned a lot from people. So मेरे लिए ये एक ऑपरेशनल ट्रांजिशन इस तरह भी थी that I was learning. But वही बात है कि because of those multiple experiences and that DNA जो एक डेवलप हुआ था कि यार one must move on all the time, तो that allowed me to explore, understand, study, talk to people physically उन जगहों पे वो काम करना जो कि probably एक बड़ा नॉन कन्वेंशनल होता है एक ऐसे बंदे के लिए, बट आपको वो एनर्जी put in करनी पड़ती है. So that's how I got to know around the business, around the people. So in short, this is a very honest way of going about it. Right. And Kamil, अगर थोड़ा सा इस पे हम again dilate करें कि operations and especially manufacturing operations, marketing aside, it requires a lot of consistency, reliability, repeatability, quality के issues आने के मतलब कि you can't really have B grade food products coming in. It's either A or very binary, zero or nothing. Yes. And unfortunately हमारे माशरे में I think ये वो repeatability and reliability again seems to be missing for a large degree. Is that a challenge? Yeah, if not that, then what would you say is the biggest challenge in the food industry facing you from the production side? Is it a challenge or is it a selling challenge? I think it's a 360-degree challenge, and it varies from industry to industry, category of food to food. आप ये नहीं कह सकते कि जी चैलेंज नहीं है, बट सबसे पहली बात, और मैं इससे आपसे एग्री करूंगा कि जो फूड बिजनेस है इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट बिजनेस, क्योंकि देखें आप लोगों की जिंदगी के साथ जो है ना you're actually feeding them, और it's a sensitive business. तो अगर आप इसकी चैलेंजेस की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा गैप है, और ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, जो फिल कर सकते हैं. बहुत बड़ा गैप है ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस, जिसको हम अपनी जबान में रॉ मटेरियल कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने टमाटर खरीदना है केचप बनाने के लिए, या मैंने फ्रूट खरीदना है पल्प बनाने के लिए, the quality of the produce
is a big challenge. मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट इस तरह ही बता देता हूँ कि आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में अदरक, गार्लिक, there is not a single field that produces garlic. 100% garlic in Pakistan is imported. और हम गार्लिक को ऐसे यूज करते हैं जैसे मतलब हकीम साहब का नुस्खा होता है, एवरीथिंग कि जी गार्लिक, अदरक ले लो, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए. सो इमेजिन दैट द पोटेंशियल दैट यू हैव कि गार्लिक की एक फील्ड नहीं है, सॉरी जिंजर की, जिंजर है ही नहीं हमारे पास. सो प्रोड्यूस का एक बहुत बड़ा चैलेंज है. सेकंड, जब हम आ जाते हैं अपनी प्रोडक्शन साइड पर, very difficult to find quality resources जहां पे हम प्रोडक्शन लेवल पे बात करते हैं. ये एक बहुत निगलेक्टेड इंडस्ट्री रही है. अब मैं देखता हूं कि यूनिवर्सिटीज हैव बीन वर्किंग वेरी स्ट्रांगली, एंड योर यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ देम, जो कि फोकस करती है कि यार फूड इज अ सीरियस डोमेन. तो उस एरिया में R&D, क्वालिटी, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो जब तक होम ग्रोन नहीं होगा क्वालिटी का, तो हम हमेशा अप्लाई करना शुरू करेंगे जो हमारी वेस्ट की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं. वेस्ट की बेस्ट प्रैक्टिसेस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सिस्टम से निकल जाती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे यहाँ विटामिन की सर्टेन कैटेगरीज या सॉल्ट की कमी है, तो गोरा कहता है जी हमारे पास तो बहुत सॉल्ट है, तो you have to localize your facilities. और मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ लोकल मैन्युफैक्चरर्स के हिसाब से. MNCs obviously they use best practices, but यहाँ पे बहुत 2000-2500 का नंबर है ऑफ फूड प्रोड्यूसर्स. सो MNCs की अगर मैं बात करूँ तो वो तो गिने चुने 8-10 हैं. There's a huge market which is locally producing food, और वो उनकी ग्रोथ इसलिए एम्पर हो रही होती है बिकॉज दे आर अनएबल टू केटर टू द ग्लोबल क्वालिटी मार्केट. सो जब हम प्रोडक्शन पे आते हैं तो क्वालिटी. तीसरा पार्ट आ जाता है सेल्स का. आई थिंक सेल्स इज नॉट अ चैलेंज, इट्स मोर ऑफ अ वॉर, आई वुड से. अगर आप बेवरेज इंडस्ट्री को ले लें तो आप सारे देखते हैं कि बेवरेज इंडस्ट्री में इज अ बिग हेड टू हेड बाय द कोलास. अगर आप रेसिपी मिक्स में चले जाते तो फिर अगेन 2 बड़े मेजर प्लेयर हैं, हेड टू हेड चले जाते. सो आई थिंक हमारी रिटेल इंडस्ट्री हैज मैसिवली इम्प्रूव्ड, leaps and bounds, especially with the injection and the platform given by the e-commerce industry and the number of channels जो e-commerce में आ गए हैं. हमारी जो grocery market है वो has really improved, and I kid you not, we have improved much better than a lot of global names from a country perspective. For example, Canada में home delivery system का अभी concept develop हो रहा है on grocery level versus America जहाँ पे Amazon and all of these things are big. But पाकिस्तान में आप देखें आपके पास multiple brands. Consumer has been enabled so much within the food industry that it's not even funny. दुनिया भर अगर solution develop कर रही थी कोविड में, तो हम फूड पैंडा से पिज्जा मंगा के खा रहे थे. It was the most beautiful holiday that we've had. So food की जो मैं value chain की बात करूं, so from summing it up, from produce quality to the skill set found in the production zone, and then taking it to the opportunity that lies within the retail or the delivery system of grocery. All of this forms the food industry, जो कि एक बहुत interesting और fast paced growing industry बन गई. Very cool. So Kamil, आपने बिल्कुल सही point out किया. I think कि you in the food industry आप mostly natural raw materials के साथ काम कर रहे हैं. उनकी अपनी variation भी होती है obviously in the natural cycle, जिस तरह की quality आपको मिलती है. फिर production बिल्कुल आपने सही कहा. Some you are dependent on machines, other I'm sure you're dependent on labor to do the proper operation which is required for conversion purposes. और तीसरी बात आपने रिटेल और चैनल्स की बात की. आई थिंक वेरी वेल पॉइंटेड आउट कि पाकिस्तान, आई थिंक ये लास्ट
2 साल में, इनफैक्ट जब से कोविड आया है, इसमें एक लीपफ्रॉग आया है हमारे अपने ई कॉमर्स मार्केट में, क्विक कॉमर्स मार्केट में, in both let's say grocery delivery become a huge play, down to food delivery another huge play, and then obviously आपकी सारी जो supply chain e-commerce relating to the industrial supply chain है उसके अंदर भी I'm sure बहुत improvement आई है. थोड़ा सा डाइग्रेस अगर लास्ट वाले पार्ट पे इजाजत आप दें, एंड देन विल कम बैक टू सम अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ कि यू नो ट्रेडिशनली जो आपका माशाल्लाह एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लेगेसी ब्रांड है मिचेल्स. आई स्टिल रिमेंबर वेरी फॉन्डली मिचेल्स की जुबली चॉकलेट होती थी. आई डोंट नो इफ इट स्टिल एग्जिस्ट्स, बट मैं स्कूल के जमाने में, it discloses my age, but full disclosure here, so I'm glad to hear it still exists. And that I think it was like a 3 rupee price point or 4 rupee, maybe it should not be mentioned because it really discloses my age. लेकिन I still remember कि हम तब भी सोचते थे कि जी you know the opportunity could have been was huge, and obviously foreign players used to come in. उनका price point बहुत different होता था. उस जमाने में bounty I still remember 14 रुपए की होती थी. So the fact of the matter is कि हम 22 करोड़ अवाम हैं. We are the 22 करोड़ consumers हमें नजर आते हैं. No matter which way you slice or dice it, Kamil, is there an opportunity for reasonably high quality product which our consumers are ready for? How do you feel on the angle of your consumption? आपका ख्याल है कि demand इतनी है for good quality produce, people are, there is willingness to pay, and there is good supply? उसके ऊपर जरा थोड़ा सा वजाहत कीजिए. जी, let's break it down into two parts. देखिए, एक्सपोजर जो है हमारी, I'm specifically talking about within the food lens. अगर हम फूड का लेंस देखिए, इस पे सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऑफ द फूड मैन्युफैक्चरर्स. ये हमारा रोल है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी मस्ट एजुकेट एंड इन्फॉर्म द कंज्यूमर कि यार हेल्दी खाना होता क्या है और तुम्हारी नीड आजकल के दौर में क्या है. अगर अब हम आ जाते हैं ऑन द साइज ऑफ द ऑडियंस, 220 मतलब मैसिव अवाम है, खाना सबको चाहिए. इसके अंदर दो किस्म की लेयर्स हैं. एक है विच इज अ हाईली क्वालिटी कॉन्शियस मार्केट, जिसको मैं कहूंगा कि very well equipped financially and otherwise is the urban market. अगर आप इसके अंदर ट्रेंड देखें तो there has been a huge consumption for organic, even इस लेवल पे कि the farmer has been educated on the organic produce, और वो बना रहा है और वो बेच भी रहा है. There are some great agribusiness entrepreneurs जो कि फार्म लेवल पे काम कर रहे हैं और ऑर्गेनिक, और वो केटर कर रहे हैं टू अ वेरी हाई एंड मार्केट विच अंडरस्टैंड्स क्वालिटी क्या है और खाना क्या होता है. फिर उसके बाद एक आ जाता है मिड टियर प्राइस पॉइंट का, जो कि जिसको हम कहते हैं कि एक ऐसा सेगमेंट है जो कन्वीनियंस फूड की तरफ जाना चाहते हैं, कन्वीनियंट फूड की तरफ जाना चाहते हैं. एंड देन इट्स द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान विच इज मैसेज, जो कि अफोर्ड शायद नहीं कर सकता या नहीं एक्चुअली जेन्युइनली नहीं कर पाता quality food. So how do we sell it to them is a big challenge, and this big challenge does not come to me, it comes to every single food manufacturer in Pakistan कि यार cost of doing business with that area कैसे create किया जाए. तो उसका one crack जो है वो ये है कि you operate with a popularly positioned product. So basically आप, जिसको आपने term सुनी होगी कि great things come in small packages. So you introduce smaller high packed quality product जो कि उनकी price point पे affordability maintain कर सके, और वो फिर volume generate करता है. जब volume business generate करता है तो फिर आपकी पूरी cost of manufacturing भी ऑप्टिमाइज हो जाती है. अब ये मैं बहुत सिंपल टर्म्स से समझा रहा हूँ. आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ डेप्थ टू इट, बट इन सिंपलिसिटी दिस इज हाउ वी आर लुकिंग एट इट. सो जहां तक क्वालिटी की बात है, हाँ जी, कुछ एरियाज में क्वालिटी कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ गई है, बट इट्स अ पार्ट एंड पार्सल फॉर द मैन्युफैक्चरर टू एजुकेट द कंज्यूमर. प्लीज वी मस्ट नॉट चीट आवर कंज्यूमर कि जी हमने इसमें ABC नहीं डाला वो ABC डाल दिया.
प्लीज आप उसको इन्फॉर्म करें. And it's a constant effort that needs to be done. अगर आप ग्लोबली देखें तो फूड के ऊपर फूड चैनल्स जो हैं वो हेल्थ के ऊपर बहुत बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ फूड पे बहुत बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग पे बहुत बात करते हैं जी. सो रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ग्लोबली, और इसके ऊपर बहुत सीरियस लेवल पे काम हो रहा है. और हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग का कोई कॉन्सेप्ट अभी मैं कहूँगा कि बहुत फाउंडेशनल है. जिसने पिक कर लिया, जिसने नहीं किया, नहीं किया. सो वो भी एक अलग सब्जेक्ट है. So there are a lot of avenues that require people to improve, and there is a lot of potential for improvement. और believe me, producer या manufacturer food industry के अंदर is willing to pick up responsibly sourced food or high quality produce made with the right price. So tunnel farming का आपने सुना होगा, that goes back, और उसने बहुत ज्यादा efficiency लेकर आया है सिस्टम में. So manufacturers are willing, because देखिए अगर मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ, मुझे मेरा रॉ मटेरियल राइट प्राइस पे चाहिए विद द राइट क्वालिटी. अनफॉर्चुनेटली अगर वो राइट प्राइस पे मुझे राइट क्वालिटी नहीं मिलेगी तो मैं मजबूर हूँ टू मेक थिंग्स ऑन अ राइट प्राइस. आपने आई थिंक दो तीन बातें की कामिल, which are very pertinent. I think number one, like you mentioned, के 2-2,500 हमारे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, they're covering to a very wide range of consumers. वाकई हम भी सुनते हैं, मैं देखता भी हूँ कि sometimes you go smaller other than KLI, आपके रूरल एरियाज में आप जाएं, tier 2 tier 3 cities में जाएं, वहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए which you've never heard of, but they're very successfully operating in an area. And one would imagine कि क्योंकि उनका एक economies of scale आ चुका है, तो slowly but surely they would want to move up in the market to hit a slightly better socioeconomic class consumer that would move toward the bigger cities, or या peripheral, let's say वो tier 1 cities में आने की कोशिश करेंगे, या tier 3 से tier 2 आएंगे. Natural leaching process, and I'm sure consolidation process भी होगा as things go on. फिर आपने दूसरी बात की about responsible sourcing. I think again बाहर हम सुनते हैं, for example fair trade coffee हो गई, मसलन के organic farming हो गई, making sure that there's ethical farming on wherever. So वाकई उसमें एक I think बहुत बड़ा component है, huge opportunity I think waiting to happen. थर्ड चीज आपने बात की कि जी वैल्यू चेन के अंदर जो plugins हैं, I think they are really getting more and more enhanced from all stages of whether it be production of farming or packing, polishing, grading. I think our consumers and our producers are getting more sensitized to what are the efficiencies which can be realized. ये बताइए कामिल, क्योंकि again like you mentioned, NIU International has been at the forefront of food technology and food sciences. हमारे both undergraduate program भी है, BS भी है, MS MPhil program भी operate हम करते हैं. What do you think कि given mashallah you are sitting in a very core food based FMCG, क्या करियर ऑप्शंस एंड क्या डिमांड आपको नजर आती है? कुछ आपने मेंशन भी किया है, बट इफ यू कुड मे बी स्पेंड 2 or 3 minutes just describing the landscape in which potential graduates could go into when they're looking at food business in Pakistan. Salem, I think the potential is immense. It is just absolutely huge, and I think हम तो tip of the iceberg पे भी operate नहीं कर रहे when it comes to food innovation जो आपने बात की. Let's start with one of the very important aspect which is known as the food safety. Food safety एक ऐसी चीज है जिसके अंदर PFA ने काफी काम किया है, and I'm happy that they have been very aggressive about it in some instances. But food safety should not just be a part of the policy making or the government part. I mean, food safety is an entire universe जहाँ पे हम काम कर सकते हैं. जो मार्केट्स जहाँ पे हेल्थ इंडिकेटर वैसे ही बिलो पार हो, तो आप इमेजिन कर लें कि वहाँ पे इस तरह के यंग प्रोफेशनल्स का पोटेंशियल
कितना बड़ा है। जनरली देखा जाता है कि जी लेट्स वर्क इन एरियाज ऑफ जो करंट एग्जिस्टिंग एफएमसीजीज हैं उनके साथ काम करते हैं। Why are the question arises कि यही young professionals और the opportunity जिसको मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि today 50% or more of the Pakistan population is considered to be youth, up under the age of 25 है। और ये वो एक इसमें बहुत बड़ा सेगमेंट है विच इज ऑन द गो। अगर आप फ्रोजन फूड मार्केट को देखें तो देयर हैज बीन अ पोटेंशियल ग्रोथ, एंड द रीजन दैट द पोटेंशियल ग्रोथ that you've seen is because now the life is on the go इस डोमेन के अंदर। एंड और मजेदार बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फूड ऑन द गो है या जो फ्रोजन फूड आज आप देखते हैं, इसकी प्राइमरीली जो आपके दिन में जिस सेगमेंट को ये हिट करता है वो सिर्फ दो है। एक ये ब्रेकफास्ट को हिट करता है और दूसरा ये सेमी स्नैक मार्केट को हिट करता है। सो लंच आपका अभी भी मिसिंग है, डिनर आपका अभी भी मिसिंग है। हेल्थ एंड फिटनेस डोमेन जहां पे मैसिव अवाम, मैं आपको इंटरेस्टिंगली बताता हूँ कि अवाम जो हमारी मैस है, जो जिम और बॉडी बिल्डिंग वाला अरीना है, उसमें इतना बड़ा पोटेंशियल है और वो एक एक्चुअली लोअर सेगमेंट उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव है। उसमें इनफैक्ट सारे स्ट्रेटस बहुत एक्टिव। सो तो अभी तो देखिए ब्रेकफास्ट को ओन करने की कोशिश की जा रही है थ्रू फ्रोजन फूड एंड देन देयर इज स्नैक साइड। लंच सेगमेंट आपका पूरा मिसिंग है। ऑन द गो हेल्दी लंच के ऊपर इनोवेशन ही नहीं है, डिनर के ऊपर इनोवेशन ही नहीं है। फूड साइंटिस्ट एंड फूड रेसिपी मेकिंग का एक पूरा एक डिविजन है जहां पे अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर 100% जिंजर अगर इंपोर्ट होती है तो आप ये अंदाजा लगा लें कि देयर इज एन एंटायर एरिना टू क्रिएट साइंस एंड दी स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली गो एंड वर्क अराउंड इट। अगर मैं मिचल्स के एम्बिट में बात करूं, वी आर ऑन अ कांस्टेंट चैलेंज टू रेनोवेट फूड। अब मुझे एक साइंस और एक स्टडी कहती है कि जी आपके मुल्क में डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई। The first challenge that I have given to my R&D team, जिसमें फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, फूड स्पेशलिस्ट हैं, मैं उनको कहा कि जी आपने अक्रॉस द बोर्ड 5% शुगर सब में कम कर दी। सो द प्रॉब्लम एग्जिस्ट। इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है कि बहुत सारी मार्केट्स में या बहुत सारे बिजनेसेस में आप प्रॉब्लम ढूंढते हैं। फूड इंटरेस्टिंग एक ऐसी मार्केट है जिसमें प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। मैल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, फूड हैबिट, ब्रेकफास्ट हैबिट का प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, शुगर का, हार्ट का, और ये सारी चीजें डॉक्टर के पास जब जाते तो वो कहते हैं जी खाना ठीक कर। सो प्रॉब्लम्स इतने सारे हैं, देयर आर सो माइक्रो प्रॉब्लम्स दैट आज जो जितने स्टूडेंट्स आपके बैठे हैं जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं या फूड इनोवेटर्स हैं या फूड के बिजनेस में जाना चाहते हैं, देयर आर सो मेनी माइक्रो प्रॉब्लम्स कि मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप कुछ भी शुरू करें आप भूखे नहीं मरेंगे। देयर इज वेरी ट्रू, दैट मच ऑफ पोटेंशियल। आयरन डेफिशिएंसी हमारे मुल्क में है, विटामिन डी का प्रॉब्लम हमारे पास है, अंडर नरिश बच्चे हमारे पैदा हो रहे हैं, माओ के लिए फूड के इश्यूज अलग हैं ऑन अ मैस लेवल, हाइड्रेशन इश्यूज हमारे अच्छे बड़े बच्चों में है, हाइड्रेशन इश्यूज। सो और मजेदार बात यह है कि इसके ऊपर सबसे ज्यादा कौन प्ले कर रहा है? स्किन केयर प्रोफेशनल्स। इसके ऊपर सबसे ज्यादा कौन प्ले कर रहा है? आपके मेकअप प्रोफेशनल्स और ये सारी चीजें, क्योंकि जब आप खाना अच्छा नहीं खा रहे तो उतनी ही आपको मेकअप और स्किन केयर इश्यूज हो रहे हैं। तो दे आर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। देखिए एट द एंड सोर्स इज फूड। दे से यू आर व्हाट यू ईट। very well said. सो ये इतना बेसिक प्रॉब्लम है और इसके ऊपर काम हो ही नहीं रहा। आई वो दैट मैं स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उनके लिए सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल उनको कोट करना चाहता हूँ दैट आई वो दैट गल्फ फूड लास्ट ईयर, और मैं ये सुन रहा था चीज कि जी अब मीट जो है, बर्गर की पैटी, मीट पैटी, वो वेजिटेबल से बनाई जाएगी। जी हाँ, इट्स गोइंग टू बी वेजिटेबल बट इट्स गोइंग टू taste like beef, it's going to smell like beef, it's going to be like beef. So imagine कि वो कितना बड़ा एक simple
product name, which is again just a burger patty, kitna bada potential open kar diya. So I would say that we are a very big. There's a huge potential for every single student sitting in this room or in your university. Fantastic. Thank you, Kamil. I think you've portrayed really a very, very wide canvas, and rightfully so, mashallah, straight from the horse's mouth, we could say. I think food security ki aapne baat ki, malnutrition ki baat ki, breakfast habits ki baat ki. I think the ready-to-eat market, which is very fast evolving, convenience food, frozen food wali market, and then, of course, the whole array of health issues, and very well pointed out, yes, you are what you eat, and waqai, I think, pharmaceuticals are benefiting, the skincare people, aesthetic people are benefiting. हम इतना I think careful होते हैं कि अपने मुंह पे कौन सी cream लगानी है, and we don't think about what we are ingesting, what we are putting on top of our skin. And imagine what we are ingesting. We don't pay heed to that. And बाकी there's like आपने कहा कि consumer की upgrading their information and making them more better equipped. I think it's a service that one would expect, like a legacy business like Mitchell's, I'm sure is at the forefront, and more power to you. Kamil, we are at time already, but ये बहुत एक दिलचस्प हमारा ये session रहा है. Time has really flown by. I would like to take the opportunity कि हम आपको thank करें फिर से on behalf of our audience who is listening now, who will listen later, our faculty which will be listening, prospective students which will be listening. Thank you so much. और इंशाल्लाह हम जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि आप भी लाहौर बेस्ड हैं, कि hopefully COVID is mostly behind us. हम सारे अपने guests को कह रहे हैं कि we would love to have you on campus for a face-to-face session, inshallah. So we'll really look forward to that. Thank you so much for your time. Salem, thank you so much for inviting me, and I think it was lovely talking to you. Finally, I was so happy listening to some genuine questions. This is the kind of discussion that needs to go on so many forums, and we need to hammer this as responsible citizens and people, especially within the food industry. So I'm very, very happy, and it was a delight to actually answer and talk about questions which are so relevant, rather than कि जी जुबली का size बड़ा कर दें, size छोटा कर दें. That's a lot of debate that I keep on listening. Pack size, yes, the damage. Very true. Thank you for your very kind words. Thank you so much. I think हमारे university का goal with having these sessions is exactly to build the much needed bond between industry and academia. We are your partners for research orientation, whether it be market research or food technology based research, recipe research. आपने इतनी opportunities हमारे सामने रखी हैं. And this thing that you talked about, it's you again learn something new every day. बाकी आप सही कह रहे हैं कि जी अदरक, ginger हम इतना इस्तेमाल करते हैं, and I cannot. It's beyond me to imagine कि locally production नहीं होती इसकी. It's unfathomable. It's something I think which we will definitely request our faculty who is listening in to really, I don't know what's wrong, what's needed, but we will pull out the stops to try and make this happen, even if at just a pilot scale. And just taking the advantage of this forum, and if Mitchell's can be of any help, any assistance in working with you or your students, and if they want to learn, our facilities are available. We are available. So please feel welcome to come and learn and understand and take the hands-on experience if your students wish to. You have my details, and I'm very easy person to reach out to, so you can. Thank you. Genuinely, that means a lot. Thank you so much. That means a lot to us, Kamil. Thank you so much. We will briefly cut over to an NIU video, but feel free to sign off. It's about a 1-minute video. And thank you again for your time. बहुत मशकूर हैं आप. Thank you so much. Thank you. Assalamu alaikum.